क्लास 7 ज्योग्राफी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें पहले मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। ये है ड्यू टू चेंज इन हाइट एंड क्लाइमेट देयर occurs a difference in natural vegetation is on. In the Himalaya region, this is a great variety of vegetation. The hardwood is used in making furniture and building materials. The deciduous forest shed their leaves in a particular season. Man has started cutting and the tree to fulfill his needs. Coniferous tree. In this foothill, there are tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped. They are coniferous trees. Taiga. In the Russian language, taiga means pure. ये आपको दिखाया हुआ है फ्लावर है ये। द नेम ऑफ दैट फ्लावर इज रोडोडेंड्रॉन। दिस इज द सेकेंड, इट इज द थ्रोनी shrubs एंड दिस वन इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हरा भरा रहता है। ये क्या है? ट्रॉपिकल deciduous फॉरेस्ट। ये बेचारा कुछ पीले से पन को लिए रहता है, येलोइश कलर में रहता है। यहाँ टाइगर दिखाई दे रहा है, कलर ऐसा है कि इसमें छिप जाए पता भी ना चले। मॉन्की है, ये क्या है? ये गोल्डन लंगूर है। ये गोल्डन कलर का होता है, क्योंकि ये भी जाके इसमें छिप जाता है, पता नहीं चलने पाता है। कुछ और देखते हैं, ये क्या है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये। यहाँ देखो एलिफेंट हैं, स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं बेचारे, उन्हें खाने पीने में लगे हुए हैं। ये बर्ड है हमारे पास, पीजेंट बर्ड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। मोनल, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। मोर का जो है वो फीमेल है ये, मोनल। मोर नहीं बोलते हैं इसको। A temperate deciduous forest, ये आपका a vineyard in Mediterranean region, यहाँ पर ऐसा कुछ बनाया जाता है। ये है coniferous forest, ये कॉनिकल की तरह होते हैं, कोन लिए हुए रहते हैं पर चोंचदार। ये क्या है? स्नो कवर्ड coniferous forest, ये बर्फ से ढके हुए हैं बेचारे। और भी देख लो, ये क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये बिल्कुल सूख गया है बेचारा ग्रासलैंड। ये जिराफ्स हैं, दे आर roaming here and there for the food, search of food. ये है वॉलरस, और ये अगला आ गया सील। बोथ आर फाउंड इन ओशियन। ये पोलर बियर है, जो व्हाइट कलर का ही होता है और इसमें आइस में आसानी से छिप जाता है, पता नहीं चलने पाता है कहाँ है ये। Now, where does citrus deciduous forest are found? So, answer: the citrus deciduous forest are found in high equatorial. Next question है, which kind of plantation is found in moderate rainfall area? So answer is grassland is found in region of moderate rain. Where does Mediterranean vegetation is found? So answer है, the Mediterranean vegetation is found in California in USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. Which kind of animals are found in tundra region?
टुंड्रा रीजन है ये। आंसर है इन द टुंड्रा रीजन पोलर बियर, Walruses, musk, oxen, etc. animals are found. What is the identification of deciduous forest? So answer है the identification of deciduous forest is that they shed their leaves in a particular season. What are the characteristics of temporary tropical grasslands? So answer है first, found in mid latitude in inner part of the continent. Second है the height of grass is very less. Describe about polar region. So answer is there, the climate of polar region is extremely cold. So the growth of natural vegetation is very limited. Due to thick sheet of ice, only mosses, lichens, and very small shrubs are found. Here, seal, walrus, musk oxen, and polar bear, etc., are found. Brazil temperature evergreen forests are so big and evergreen that they are called the lungs of the earth. Can you suggest why? Answer, the evergreen forests are very dense and the trees provide oxygen to the atmosphere. They keep the proper balance of oxygen in atmosphere. So the body get oxygen through lungs and the atmosphere got it from trees. Name largest snake of the world. So answer is world largest snake is Anaconda. Next, which type of forest dominate most part of India? So answer is monsoonal deciduous forest. Collect the picture of different animals and make album. एल्बम बनाने के लिए आप लोग different pictures कलेक्ट करिए इंटरनेट के थ्रू। तो चलिए यहाँ कुछ पिक्चर यहाँ दिखाई गई है। ये है आपका पीकॉक दिखाई दे रहा है, ये पांडा है, और यहाँ पर भी देख लीजिए ये पिक्चर्स ऐसे ही कलेक्ट करनी है आपको बर्ड्स की भी। और यहाँ पे देखो दिखाई दे रहे हैं बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एक और दिखाई दे रहा है, कैमल वगैरह दिखाई दे रहा है, ये भी है कलर एनिमल। इस तरह से आपको सारी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। नाउ कम टू द ये इंडिया है, मेन वेजिटेशन दिखाया हुआ है इंडिया का ये। तो काइंड ऑफ वेजिटेशन से बताया, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, ये थॉर्नी फॉरेस्ट है और टाइडल फॉरेस्ट है और वेजिटेशियल ऑफ हिमालय है। तो यहाँ हर एक तरह के दिखाया हुआ। देखो ये जो है वेजिटेशियल ऑफ हिमालय दिखा रखे हैं आपको। ये वाले कौन से है? ये वाला रीजन है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये वाला कौन सा रीजन है? ये हिमालय वाला है। इधर जो रीजन दिखा है थ्रोन फॉरेस्ट है, ये थ्रोनी फॉरेस्ट है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ हमेशा हरियाली छाई रहती है। तो ये वाला एरिया भी हरियाली छाई रहती है। बीच में जो खाली दिखाई दे रही है ये दूसरा देश है, बांग्लादेश है। नीचे वाले पार्ट में भी देखिए ऐसे ही कुछ दिखाया गया है। ये रहा नीचे वाला पार्ट, इसमें अरब सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। इसमें भी काइंड्स ऑफ वेजिटेशन वैसी है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, थ्रोनी फॉरेस्ट है, टीडल फॉरेस्ट है, टाइडल और वेजिटेशियल ऑफ हिमालय। तो ये सारे फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। किनारे किनारे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ समुद्र के किनारे हैं तो हमेशा हरा भरा रहता है। बीच में ये थ्रोनी दिखाई दे रहा है आपको, और ये एक और दिखाई दे रहा है। ये वाला क्या है? ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। बे ऑफ बंगाल में ये भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे किए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और मैप को तैयार। यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, इधर अंडमान निकोबार आइसलैंड है। चलिए, कैन यू टेल व्हाई शिमला
saw changes in natural vegetation as they climbed higher and higher. What type of vegetation did she see in the Himalayas, starting with the foothill and going to the higher altitude? Answer is Simla saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher because there was change in climate and rain. So there were difference in plantation. Simla saw salt tree at Greepad forest and at the foothill foothill she saw tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies. She noticed bloom of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons from Manali as she was traveling up to Roteng past sea was that the land was covered with short grass and snow in some places. कुछ जगह पे बर्फ भी पड़ी हुई थी. Next है like Simla when you go to visit any new place. Notice the type of natural vegetation offering there and try to think of factors responsible for the growth of such vegetation in that habitat. Answer है I have gone to Calcutta and there I saw mangrove forest with following characteristics. First है ये mangrove forest are evergreen, they grow and survive on salty water. Next, these extend in West Bengal as Sundarban and found in Andaman Nicobar Island. Third है Sundari is main tree, so these forests are called Sundari Ban. यानी सुंदरबन इसी के नाम पे पड़ा हुआ है. It is the mangrove forest. ये mangrove forest दिखाया गया है. Where in India do tropical evergreen and tropical deciduous forest occurs? Name the states. So answer है in the Indian tropical evergreen forest are found in Kerala state and eucalyptus in the main tree. Tropical deciduous forest are found in Meghalaya. Look around in your surrounding and find out the आर्टिकल्स मेड ऑफ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड. सो आंसर है ये वुड लिया हुआ है, इसमें सॉफ्टवुड है और इधर हार्डवुड है. तो पहले सॉफ्टवुड में देख लेते हैं. पैकिंग मटेरियल है, कॉपी है, मैच बॉक्स है और कोर है. इधर क्या है हार्ड में? फर्नीचर है, डोर विंडोज है और बॉक्सेस हैं और डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं. Find out and learn name of few trees of your locality. तो चलते हैं. आंसर है ये पहला मैंगो है, दूसरा जामुन, तीसरा है गुआवा एंड फोर्थ इज नीम. फिफ्थ है पीपल, सिक्स है कीकर एंड सेवन इज साल एंड एट्थ इज सीसम, नाइन्थ इज अशोक एंड टेंथ इज बेल. ये सारे नेम ऑफ द ट्रीज हैं. चलिए क्या है इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड सो पम्पस एंड वेल्ड ग्रास लैंड. इसके अंदर दिखाए गए कहाँ कहाँ पर है. ये देखो पैम्पर दिखाया गया, यहाँ पर है पैम्पस, ये यहाँ पे वेल्ड है. बस यही दो जगह है बच्चों पूरे वर्ल्ड में, तो आप देख सकते हैं. चलिए क्या है इन द मैप ऑफ वर्ल्ड सो द मेन वेजिटेशन. ये मेन वेजिटेशन आपको दिखाए गए हैं, मैंने पहले दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिया हुआ है. ये मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है. ये मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट है और ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है और ये कॉनिफिशियस डिसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और माउंटेन फॉरेस्ट है, डिजर्ट प्लांट है और टुंड्रा फॉरेस्ट. तो ये सारे वर्ड में पूरे दिखाए गए हैं, आप इसको मैप को देख करके बड़े क्लियरली आप समझ सकते हैं इसको. चलिए नेक्स्ट में देखते हैं.
Which are the two factors on which the growth of vegetation mostly depends? Answer है ये for the growth of vegetation, the forest are climate, rain and thickness of soil. Which are the three broad categories of natural vegetation? So categories दी हुई हैं, पहला है forest, second है thorny shrubs हैं और तीसरा है grassland. ये thorny shrubs. Name the two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forest. So answer है ये है महोगनी है और ये रोजवुड है, रोजवुड. In which part of the world are tropical deciduous forests found? So answer is the first is northern Australia, second is Central America and third India. In which climate conditions are citrus fruit cultivated? So answer is citrus fruit are cultivated in the Mediterranean climate conditions. Mention the use of coniferous forest. So answer है use of coniferous forest, matchbox, pulp, packing box or shelter of animal and birds. In which part of the world is seasonal grassland found? So temperature grassland part. Take the correct answer. तो first है ये Moses and Lichens are found in. कहाँ फाउंड होते हैं? ये है आपका टुंड्रा वेजिटेशन में. सेकंड है थ्रोनी बुशेस आर फाउंड इन. थ्रोनी बुशेस कहाँ है? ये हॉट एंड ड्राई डिजर्टिक क्लाइमेट. अब थर्ड की बात कर लो. इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज. सो इट इज द मंकी. मंकी रहता है मोस्टली यहाँ पे. चलिए, one important variety of coniferous forest is. तो कौन सा है इसके अंदर? दैट इज द पाइन. पाइन ज्यादा पाया जाता है. ये क्या है? स्टेप ग्रासलैंड इज फाउंड इन. सो दैट वन इज द सेंट्रल एशिया. आंसर इज सेंट्रल एशिया. मैच द फॉलोइंग है पहला. तो ये देखिए क्या है? वॉलरस. वॉलरस कहाँ पाया जाता है बताना है आपको. ये है अपोलर एनिमल. चलिए सेकंड देखते हैं. ये है सिडार. सिडार कहाँ मिलता है बच्चों? दैट इज द सॉफ्ट वुड ट्री है ये. अगला है ओलिव, लौंग का तेल. ये क्या है? अ साइट्रस फ्रूट. सेकंड है एलिफेंट. एलिफेंट तो आपको पता होगा बच्चों, an animal of tropical deciduous forest. अब अगला आता है कैंपस. कैंपस के लिए देखो कहाँ है? इट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील. और नेक्स्ट बच गया 6. ये डॉन्स है. डॉन्स कहाँ मिलते हैं ये? दैट इज द जो बच गया वही है. ये है टेम्परेचर ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. गिव रीजन्स. चलिए रीजन देख लेते हैं. द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन. सो आंसर है इन द पोलर रीजन द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड ड्यू टू आइस स्टॉर्म एंड कूल एयर. टू बियर द कोल्ड द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन. Tropical deciduous trees shed their leaves in the dry season. Answer because water supply to tree becomes slow. In the dry season the tree could not bear the water for a long time. The type and thickness of vegetation changes from place to place. So answer है the climate of every place is more not same. Somewhere high rain and somewhere low. At every place the soil is not of one type. Collect picture and photograph of forest and grassland of different part of world. Write one sentence below each picture. चलिए ये पिक्चर देख के आंसर है. पिक्चर दी हुई है.
चलिए यहाँ पे लिखने आंसर ये है ट्रॉपिकल कंसिडर्ड फॉरेस्ट एंड दे हैव लॉन्ग एंड थ्रोनी लीव्स। यहाँ पे देख लो क्या है, ये माउंटेनियस फॉरेस्ट द लीव्स वन ऑफ द कोनिकल शेप सो दैट आइस इज नॉट डिपॉजिटेड। Make a college of rainforest, grassland, and conspicuous forest. यह है आपका ट्रिपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Generally, in how many groups of the natural vegetation is kept? तो ये 3 ग्रुप्स में है, ये आंसर है आपका। The place where moderate rainfall occurs, the type of vegetation is. So ये that is the grassland है आपका। The tree found in tropical evergreen forest is, ये आपका आपने है। फोर्थ है टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो ये है मिड लैटिट्यूडनल रीजन। Which type of area is called orchards at the world? So आंसर है इसमें बी पार्ट है, ये मेडिटेरेनियन रीजन। How are the tree is dry region? In dry region, so in dry region the trees are small, thorny, and have thick stem. Name the area where temperature deciduous forests are located. So answer है first है China and second है New Zealand. Which kind of animal are found in coniferous tree? So answer है silver fox, polar bear, and mink. Name the animal of tropical grassland. So answer है elephant, zebra, giraffe, deer, and leopard. Name 2 vegetation of tundra region. So answer है first है mosses and second है lichens. Lichens ये। Name the tropical grassland. So ये grassland है, जिसमें कौन कौन सा आ रहा है, ये है सवाना ईस्ट अफ्रीका, और ये लेलोनस ये वेनेजुएला में है, और कैंपस कैंपस ब्राजील में है। What are evergreen forests? तो आंसर है evergreen forests are those where the trees do not shed their leaves and always remain green. Write the name of temperature grasslands. Pampans अर्जेंटीना, और सेकंड है ये पैराया रीड, थर्ड है वेल्ड, फोर्थ है स्टेप, एंड फिफ्थ है डाउन, और ये पहला पेरिन है ये नॉर्थ अमेरिका है, वेल्ड है ये साउथ अफ्रीका, और स्टेप जो है वो सी एशिया सेंट्रल एशिया, और डाउन में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। In how many groups the natural vegetation is divided? So answer है first है forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. B है grassland which grow in the region of moderate rain. C has shrubs, thorny shrubs and scrubs grown in the dry region. Write 2 characteristics of temperate deciduous forest. चलिए आंसर है these are grown in higher latitude and shed their leaves in the dry region. Second है the common tree are oak, ash, and beech, etc. Deer, fox, wolf, pheasant, monal, etc. Write about desert vegetation. So answer है the desert vegetation is found in dry desert where the average rainfall is very less. Only thorny bushes are grown here.
राइट टू बेनिफिट ऑफ कॉन्फिरियस forest. तो आंसर है raw material for making news print and making pulp are got from the softwood. Second, from one softwood bottle covering is made. Write about tropical evergreen forest. So answer the first area. This thick forest occurs in the region near the equator and close to the tropics. Climate and rainfall. The temperature is more than 45 degrees C and annual rainfall is more than 200 centimeter. Third head tree. The height of the tree is 60-meter thick and closely attached. The soil is always filled with water. The sun rays could not reach to the surface. Fourth है economic value. For economic benefit, the tree have less use as only one type of vegetation is found here. Fifth है tree found here, so rosewood, ebony और mahogany है, etc. Write about the characteristics of Mediterranean vegetation. तो चलिए देखते हैं आंसर है फर्स्ट है द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इज फाउंड इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स सेकेंड है इन दिस वेजिटेशन एरिया मोस्ट फाउंड इन ड्राई summers and mid rain winters is experienced. Third है here citrus fruits are commonly cultivated. Number 4, in place of natural vegetation, man-made plants are grown. There is not much wildlife. Difference between vegetation and animal world. तो चलिए देखते हैं vegetation है यहाँ या animal world है. तो first number है ये vegetation. The place where the green plants grow are called vegetation. Second है in the natural vegetation. Forest, thorny shrubs and grassland are included. Third number है in Indian 47,000 types of plants are found. Animal words में देखते हैं the animal world include from single cell to largest whale. Animals are divided into three categories. First है water animal, second है land animal, number third है sky animal. In our country, there is varieties among animals. There 89,000 types of animals are found. फर्स्ट में वेजिटेशन है और सेकंड में एनिमल वर्ड्स देखते हैं. पहले वेजिटेशन वाले में देखते हैं. 5,000 plants are only found in India. और फिफ्थ नंबर है plants are divided into two categories having flower and without flower. 6 नंबर पे आते हैं इन आवर कंट्री देयर आर मेनी टाइप ऑफ वेजिटेशन दे इंक्लूड टेम्परेचर deciduous फॉरेस्ट टू पोलर रीजन फॉरेस्ट. इसमें देखते हैं जरा एनिमल वाले में 2,500 टाइप ऑफ फिशेस एंड 2,000 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड. Due to food habit, the animals are divided into two categories. First है vegetarian, second है non-vegetarian. Some wild animals are an extinct point, so we have to take care about them. Write the qualities of deciduous forest. So answer है first the forest is grown where the annual rainfall is from 100 to 200 centimeters. These are monsoonal forests. Second, the wood is very valuable on the economic points of view. So third number है trees shed their leaves in the dry season to conserve water after 6 to 8 weeks. Fourth है ये main tree are sagon, sal, teak, sandal, sesame, etc. इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है. नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें. कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।